हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी में। आई मीन अ ब्रांड न्यू एपिसोड विद ब्रांड न्यू गैजेट्स। और मजा इसी बात का आता है बिकॉज द मोर वी मूव अहेड इन दिस फील्ड ऑफ टेक, द मोर काइंड ऑफ गैजेट्स वी सी। और हर बार कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स सी इस एपिसोड में आपको क्या नया और एक्साइटिंग मिलता है, स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम मी। आई एम गौरव चौधरी एके टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज एज वी मूव अहेड, सबसे पहले हमारे जानना जरूरी है कि क्या नया हुआ इस पूरे हफ्ते इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन आवर सेगमेंट न्यूज ऑफ द वीक। Oppo ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया अपना Find N3 Flip at a starting price of 77,190। Find N3 Flip में एक 6.8 इंच AMOLED मेन डिस्प्ले है with 120 Hz ऑफ रिफ्रेश रेट एंड एक 3.26 इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले। ये फोन Dimensity 9200 प्रोसेसर से पावर्ड है। कैमरास के लिए इट कम्स विद 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, एन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड ए 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। इट गॉट वायरल बिकॉज ऑफ हाउ इट लुक्स, बट देन 2020 से पहले तो ये भी रिडिकुलस ही लगते थे। The freshly brought to India Dyson Zone is a pretty unique and impressive device. ये एक प्रीमियम वायरलेस हेडफोन है जिसमें इंटीग्रेटेड है एक impressive personal air purifier. The air purifier bit, it will start making sense once the winter smog sets in Delhi. So for now, let's just say it's great that it can be detached. As for the headphone bit, ये one of the most well-built headphones है because everything you touch gives you confidence and screams premium. इसका native sound quality काफ़ी अच्छा है, clarity तो बहुत stellar है, but because the headphone bit actually has compressors built in जो हवा को खींचते हैं and then it is housed in metal, this bulk helps with passive isolation which is good, and upon activation, active noise cancellation is so much better. आप Dyson के companion app से इसके काफ़ी सारी features को control कर सकते हैं, but as a product, it is a new segment in itself. Qualcomm ने recently host किया a wireless broadband and connectivity day in Delhi. The major talking points being 5G and how it will bring in last mile connectivity for the rest of India. 5G is very further reaching economically, socially, and as we know, 35% or 40% of the country is not yet connected. And so the sooner you get 5G capabilities out there and not rely entirely on fiber, because deploying fiber takes time. You have to dig trenches. You have to make sure you have the right areas available to lay the fiber. 5G is fairly instantaneous. ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी भी था टू सी द एक्सपीरियंशियल बेनिफिट्स जो 5G, 6G एंड 7G लेके आएंगे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी ने ना एक चीज जरूर नोटिस करी होगी। इफ यू सी एनी न्यू मॉडर्न स्मार्टफोन और गैजेट फॉर दैट मैटर, देयर इज वन टर्म व्हिच इज डेफिनेटली यूज्ड एंड द टर्म इज AI, artificial intelligence. I mean, in all the products around us, there's some sort of AI feature baked in, जहाँ पे हमको ये मालूम चलता है that this product or this smartphone or this particular fridge is smart because it's using AI. Now, speaking of smartphones, there's one brand जो AI को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. No, it's not Apple. No, it's not Samsung. I'm talking about Google. And what I have with me, Google का नया वाला Google Pixel 8 and I've also got the Pixel 8 Pro. अब ये जो दो नए फोन्स हैं, they rely heavily on AI to deliver something amazing, something unique, something जो शायद आज से पहले किसी और फोन में आपको ना मिली हो। अब यहाँ पे Google started with their own tensor of chipset, starting with the Pixel 6, and now this is the 8 having the latest Tensor G3 chip. अब ये जो phones हैं, ये okay, being a modern smartphone, they have all the bells and whistles, but what they have as an add-on, all thanks to AI, are some unique smart features. So let's see up close कि आखिर AI की मदद से phone का experience कैसे enhance हो जाता है. We've got three new things. The first one is Best Take. The second is Magic Editor and the third one is Audio Magic Eraser. Let's have a closer look.
Google ने लॉन्च किए हैं मल्टीपल AI फीचर्स इन द लेटेस्ट Pixel स्मार्टफोन लाइन, which is the Pixel 8 and the Pixel 8 Pro, packing some of the most insane and useful features. Let's have a quick look इनमें से कुछ फीचर्स हैं क्या. Best take. Now हम सब उस सिचुएशन में हो चुके हैं जहां पर एक परफेक्ट ग्रुप फोटो नहीं आ पाती है. कभी कोई उस कैमरे की तरफ देख नहीं रहा होता है, और sometimes someone is looking funny. Best Take uses the photos you did take to get the photo you thought you took. To make that happen, एक on device algorithm एक blended image create करता है from a series of photos जिसमें सबके best looks को compile किया जाता है. Magic Editor in Google Photos is a new experimental editing experience जो यूज करता है generative AI को, जिसकी मदद से आपकी फोटोज इन लाइन आ जाती हैं with essence of the moment that you were trying to capture. You can reposition, आप सब्जेक्ट्स को resize कर सकते हैं या फिर presets को यूज कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड पॉप करने के लिए, और वो भी सब with just a few taps. ऑडियो मैजिक इरेजर एक ऐसा फीचर है जो आपको इजीली डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स कम करने की कैपेबिलिटी देता है अपनी वीडियोस में. फॉर एग्जांपल हाउलिंग विंड्स या नॉइजी क्राउड्स. ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक कॉम्प्यूटेशनल ऑडियो कैपेबिलिटी है जो फोन्स में आई है, और ये यूज करता है एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स को साउंड्स को डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर्स में सॉर्ट करने के लिए, जिनका लेवल आप बाद में कंट्रोल कर सकते हैं. Let's plan out something ना, लॉन्ग वीकेंड भी है, 3-4 दिन की तो आराम से छुट्टी होगी. Let's do it. Let's plan out something ना, लॉन्ग वीकेंड भी है, 3-4 दिन की तो आराम से छुट्टी होगी. Let's do it. Guys, I'm sure आपको देख के एक अलग लेवल का शायद जादू फील हुआ होगा, all thanks to AI, that how these new phones are able to do these amazing things like the best take, or in fact the magic editor or the audio magic eraser. For a fact, let me tell you, Google is promising कि ये जो नए phones हैं, they'll be supported for 7 years now. So basically what it means is, ये जो नए phone हैं, they come with Android 14. They will continue to receive updates for 7 years. मतलब 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स, 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स, and 7 सालों तक the Google Pixel drops, which means that you can use these phones for longer now. Now you know what? I can predict one thing for sure, and I can guarantee कि बचपन से लेके अभी तक for sure you have experienced some sort of a computer game or a video game. I mean guaranteed. Even today, your phone might have a huge library. हो सकता है आप PC पे games खेलते हो. You might even have a gaming console. And speaking of gaming, like this is a modern thing जहाँ पे हम सभी कहीं ना कहीं तो video games खेलते ही हैं. And one name which is right up there is Nintendo. But guys, did you know that Nintendo was not always into gaming? Started in 1889. उस टाइम पे Nintendo जो है, used to make playing cards. But it was not until 1970s कि Nintendo ने enter किया into the field of gaming. उस टाइम पे जब Nintendo का थोड़ा सा the mood changed, the company kind of went into the gaming side of things. It was in 1985 that Nintendo Entertainment System, the NES, became really popular and home gaming was a thing. और उसके बाद में with the Super Nintendo, with the Nintendo 64 and everything coming along, the rest is history. But did you know कि एक कंपनी जो 1889 में प्लेइंग कार्ड्स बनाती थी, वो एक टाइम पे दुनिया में सबसे ऊपर पहुंची इन द फील्ड ऑफ गेमिंग. वैसे अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी एक मैसेज है, some crazy fact, you know the address, it's tg@ndtv.com. जल्दी से भेजो अपने सारे emails. I'll have a closer look. Guys, you know what? I have a thing about red. I love my gadgets in either black or red. And what this phone is a combination of some black and some red. ये है नया OnePlus 11R in a solar red edition. This phone is really special for two things. Okay, so you know the regular OnePlus 11, you know the regular OnePlus 11R, but ये एक जो नया edition अभी आया है, it has two new special features. The first is of course this new red color with a vegan leather back. I mean the back finish is really good. हाथ में काफी आपको अच्छा फील होता है, slip नहीं होता है, and I mean it gives you that premium feel. At the same time, what it has inside is even more powerful because this phone is right now in India the phone with the most amount of RAM available. इस फोन में 18 GB की RAM है. Yes, it has 18 GB RAM coupled with 512 GB of storage, paired with the Snapdragon 8 Plus Gen 1, this 50 megapixels triple cam setup, a nice display in front. So basically everything combined in this new finish
and even more power. This is the new OnePlus 11R सोलर रेड एडिशन। देखते हैं कि आखिर ये फोन और क्या फीचर्स लेके आता है अपने साथ इसी नए पैकेज में। OnePlus ने recently लॉन्च किया है the OnePlus 11R Solar Red 5G smartphone. The main difference between this variant and the outgoing 11R variant is the amount of RAM. The OnePlus 11R Solar Red 5G इसमें आपको 18 GB of RAM मिलता है जो top of the line है। This makes it ideal for power users and gamers who need a lot of RAM to run multiple apps and multiple games, वो भी एक साथ simultaneously. The OnePlus 11R's new color variant, इसको Solar Red का नाम दिया गया। ये एक बहुत ही vibrant red color है and surely crowds में stand out करेगा। Other than these differences, the OnePlus 11R Solar Red इसके बाकी specifications regular OnePlus 11R से मिलते जुलते हैं, यानी इसमें भी एक 6.74 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, एक Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सिस्टम है और एक 5000 mAh की बैटरी जो 100 वॉट्स की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। प्राइसिंग The OnePlus 11R Solar Red को प्राइस किया गया है at 45,999 in India. It is available to purchase from OnePlus's own store, oneplus.in, and their OnePlus store app called the OnePlus Experience Stores. So guys, I'm sure you all are enjoying this week's episode of Gadgets 360 with Technical Guruji, but अभी टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए even more fun, even more excitement from the field of gadgets coming soon. Hello everyone, welcome back after the break to Gadgets 360 with Technical Guruji. My name is Gaurav Chaudhary aka TG, and abhi it's time for me to share a nice tip with you, a nice tech tip with you. अभी break में मैं इसी के बारे में सोच रहा था and I was like, you know, let me share this with you because this at times could be very helpful. अब अगर आपके पास में एक Apple Watch है तो चांसेस आर कि आपके पास में आईफोन तो होगा ही बिकॉज यू कांट यूज द एप्पल वॉच विद एनी अदर फोन। एंड अगर आपके पास में दोनों प्रोडक्ट्स हैं यू कैन डू सम अमेजिंग स्टफ विद कैमरा बिकॉज समटाइम्स यू नो इट्स लाइक कि आपको आपकी फोटो तो क्लिक करनी है बट देयर इज नोबडी टू हेल्प यू। अब आप अपना फोन कहीं रखें तो आप देखें कैसे कि यू नो व्हाट द फोन इज कैप्चरिंग या हाउ टू यूज इट इन फॉर्म ऑफ रिमोट शटर आप नहीं कर सकते हैं। बट विद दिस एप्पल वॉच पेयर्ड टू योर फोन आप अपने कैमरा का एक लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर कैमरा फ्रॉम फार अवे, सो यू कैन जस्ट पुट योर फोन समवेयर, कहीं दूर आप रख सकते हैं एक फ्रेम बना के। यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ व्हाट द कैमरा इज सीइंग इन योर एप्पल वॉच। यू कैन कंट्रोल अ फ्यू ऑफ द बेसिक सेटिंग्स एंड देन यू कैन ट्रिगर द शटर स्ट्रेट। सीधा अपनी घड़ी को यूज करते हुए आप फोटोज खींच सकते हैं। यू नो समटाइम्स व्हेन आई एम इन रिमोट एंड जब मैं अकेला कुछ शूट कर रहा होता हूँ आई यूज दिस टेक्निक टू मेक श्योर दैट आई यूटिलाइज द पावर ऑफ माई आईफोन। Even when no one's around, I can shoot myself all thanks to this Apple Watch. आप इस टिप को याद रखना और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कूल बनने के लिए you can definitely use your watch to control your camera on your iPhone. Okay, so अभी हम आ गए हैं you know in my favorite section because I believe in sharing is caring and because आप सभी जब अपने टेक वाले क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं and I get to answer your questions, I feel lucky that yeah I'm able to share some of my knowledge. तो एक बार देखते हैं इस हफ्ते हमारे पास में क्या क्वेश्चंस हैं and I'll be ready with all my answers. Hey Technical Guruji, do you think the Google Pixel 8 will actually have software updates and support for 7 years? Google is bringing in this new claim of 7 years of support for their new Pixel phones, the Pixel 8 and Pixel 8 Pro. अभी अगर हम बात करें the current standard in the industry is that iPhones usually get the updates for 5 or 6 years from Apple. Samsung जो है वो 4 साल तक हमको OS अपडेट्स देता है, 5 साल तक हमको सिक्योरिटी अपडेट्स देता है एंड Samsung एंड Apple both you know they are really good at delivering these updates. Google ने भी अभी तक जो हमको अपडेट्स दिए हैं वो यही 3-4 साल तक हमको मिलते थे बट नाउ विद द Pixel 8 Google is promising for 7 years. Now what I feel is it should not be that difficult of a job for Google to do that because the hardware that you see in the phone is all designed by Google. The software Android is coming from Google. So Google क्योंकि एक साल में इतने ज़्यादा फोन्स को लॉन्च भी नहीं करता है, there is not really a huge lineup of smartphones that Google has to develop the softwares for. So I think it's safe to say that yes, for now
I mean, okay, future में क्या होगा? I'm not sure, but looks like that yes, Google will be able to deliver this update situation for 7 years for the new Pixel phones. Hello Technical Guruji, if you could suggest one action camera for motor vlogging, which one would be? Is having a camera enough? See, of course, having a camera is not really enough. आपको इसके अलावा भी चीज़ें चाहिए. The biggest thing that you need is your content. Camera is just a way to shoot that. अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैमरा चाहिए, and if you just want to proceed with just one camera, I would say get a 360-degree camera, the new Insta360 X3 or maybe the One RS, because that way you'll have a huge, kind of versatile setup जहाँ पे आप 360 videos भी record कर सकते हैं. You can shoot from various angles and everything. But yes, if you don't feel like doing those 360-degree videos, then a GoPro is any day, a definite fit. So you can decide between a GoPro or a 360-degree camera. Both would be really good for the motor vlogging setup. Hello Technical Guruji, which cloud storage platform would you suggest? I would say go with something like a Google Drive or a box.com. I mean, okay, so two things. One, you need to see the cost कि आपको ज़्यादा better जो है वो cost कहाँ मिल रही है. At the same time, you need to also have a look at how kind of versatile that platform is, how cross-platform compatibility is coming in, because let's say if I suggest you iCloud, sometimes iCloud becomes a pain to use, in all your devices. So the best bet would be to use Google Drive because it's very fast, it's secure in a way that you can trust Google for that. Of course, you don't want to have a strong password, but everything put together, I think Google Drive will give you a great experience. I would say you can go with the Philips 1000i series of air purifiers. Abhi to in fact in the festive season you might get some great offers as well. So you can have a look around. There are a couple of models from Daikin as well. So I mean in that price you'll have multiple options and more or less they all perform in kind of a similar way. But my bet would be on the Philips air purifier. That's quite good. Okay, so guys, that's all for this week's Gadgets 360 with Technical Guruji. I mean, what an amazing episode. We spoke about the AI features in the new Pixel 8 series. हमने नया लाल रंग का OnePlus 11R भी देखा है. वैसे और भी बहुत कुछ है आपके लिए दिखाने को, but everything coming to you next week in again a similar episode जहाँ पे हम कुछ और नए gadgets की बात करने वाले हैं. वैसे अगर आपके उनमें कुछ भी बातें हैं, if you want to write anything, any feedback, any appreciation, your complaints, your questions, your queries, anything, you know the address. It's tg@ndtv.com. मैं आपसे मिलने वाला हूँ next week in another amazing episode of your favorite show. That's it for now. Have a good day.